What's up, guys? Hope you're well. Welcome to another training. And today we'll talk about how to price your services as an online fitness business owner, a fitness coach है online, or you have an online fitness business, but you are confused कि यार pricing कैसे करें? Pricing कैसे charge करें? And this is one thing which I've seen everyone to be confused with, not just beginners or advanced. Today we will sort this out. एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई है। वी लिव इन इंडिया, वेलकम टू इंडिया। आप हर जगह एड्स देखोगे, बिकम अ हाई टिकट कोच, ये वो, यूज द स्क्रिप्ट, यू विल बिकम अ हाई टिकट कोच। अपनी कंट्री में ये, और स्पेशली अपनी इंडस्ट्री में ये वर्ड जोक बन चुका है, हाई टिकट। हाई टिकट की वजह मैंने एक वर्ड खुद ही इन्वेंट किया है जिसको कहते हैं राइट टिकट। राइट टिकट इज बेसिकली यू चार्ज द मैक्सिमम यू कैन एज पर योर ब्रांड। आप अपने ब्रांड के हिसाब से चार्ज करो, राइट? एंड दैट इज व्हाट, सो इफ आई एम एवर मार्केटिंग एफबी और एनीथिंग एल्स, मैं आपको ये नहीं कहता आई मेक यू हाई टिकट कोच। I would say that I'll build your business in a way that eventually you would be able to charge high ticket because lot of it has to do with brand. काफी लोगों को ये लगता है कि भाई हम कोई भी मैजिकल कोई स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे, कोई हाई टिकट स्क्रिप्ट आ जाएगी जिससे गेम चेंज हो जाएगी। स्क्रिप्ट्स डू वर्क, स्क्रिप्ट्स डू हेल्प, स्ट्रक्चर्स है, बट ये नहीं है कि आप एकदम ही बिगिनर कोच हो, जीरो के स्टडीज है और आप सीधा कहो कि यार आई चार्ज एक्स अमाउंट ऑफ मनी। यू कांट, राइट? एंड सो दैट इज व्हाट, why will I lose some future clients because of this? Because this trading is full of truth. But again, money is important. More clients are important for me. If you want to become a client, just there will be a link below. But more than that, what's more important is building a business based of truth, building a business based of principles. So whenever I teach sales to anybody at FBA also, or even FBE or high ticket mastermind, we always teach ethical stuff. We don't teach कि फालतू में प्रेशराइज करो लोगों को, करो ये सारी चीजें करो। So इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ that whenever you have to price your services as a fitness coach, you should always think about right ticket. What is the maximum I can charge? ये नहीं कि सीधा okay I want to charge 1 लाख रुपीस, कोई मैजिकल स्क्रिप्ट आ जाएगी। There are certain companies जो ये चीज को मार्केट करके बेचती है, बट वो कंपनीज आपको बेवकूफ बना रही है। सिंपल रीजन उसका क्या है? You are working with humans and you are working with smart humans. Indian customer is very smart and it's as simple as that, right? If they don't see the value, और आप दुनिया की बेस्ट स्क्रिप्ट भी यूज करो, it won't work out. Okay, so first, how do I define high ticket in our country? अब थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड कर देता हूं और मैं ये भी समझा देता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके, सो एक चीज बताता हूँ। ट्रेन्ड बाय वाईवीएस, इफ यू डोंट फॉलो अस ऑन ट्रेन्ड बाय वाईवीएस, दैट्स आवर मदर कंपनी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एज अ कोच। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर 4000 लाइव्स एंड वी हेल्प पीपल मेक इट द लास्ट टाइम दे आर डाइटिंग। Last I was coaching one on one. Still, I still do take up some clients at this price. I was charging 4,35,000 plus GST. इससे just पहले मैं charge कर रहा था 1.5 lakhs plus GST. That was till January 2023. उसके बाद I stopped taking up clients personally because मैं coach कर करके बोर हो गया था. Last 2 years में I did not even have a single challenging client personally. So I was like, I was bored. It's as simple as that, right? And this is what I was charging for 12 weeks. 4,35,000 plus GST. अब ये सुनने में अनरियलिस्टिक लगेगा, बट मैं बताता हूँ कि 4,35,000 प्लस जीएसटी पे क्यों सेल होता था पैकेज। पहली बात, लुक एट आवर ब्रांड, लुक एट आवर अथॉरिटी। सेकंड, वी वर नेवर एक्टिवली सेलिंग दिस पैकेज। इस पैकेज का नाम हमने प्लैटिनम रखा था, हम इसको एक्टिवली सेल नहीं कर रहे थे। एंड वी गेट हंड्रेड्स ऑफ लीड्स एवरी डे, एंड देयर वर दीस पीपल हु वर लाइक कि देयर आर दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर लाइक ओके वी जस्ट वांट द टॉप पैकेज, नथिंग एल्स, राइट? सो उस टाइप की लीड्स आती थी, सो वी वर एबल टू चार्ज दैट। इससे जस्ट पहले ये भी मैं नंबर में बता देता हूँ कैसे आया था। मैं आया था रैंडमली, जब 1.5 लाख रुपीस चार्ज कर रहा 2023 जनवरी में। उसके बाद मैंने कहा आई डोंट वांट टू कोच, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू पीपल, आई वाज लाइक लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो मैंने एक दिन रैंडमली वन ऑफ आवर ऑनबोर्डिंग हेड को मैंने कहा कि यार जस्ट कोट दिस नंबर, रैंडम नंबर, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग यस एट दिस। वेट लिस्ट बन गई, तो यार आई रियलाइज दैट ओके दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच वी कैन चार्ज। बट 1.5 lakhs आई वाज कंसिस्टेंटली चार्जिंग टिल January 2023. I mean, I was taking up like 5 to 6 clients per month at that price, and that was working well. Now, ये भी इस पे भी आ जाता हूँ कि why were people paying me this much of money? I'll get to that in a second, but let's understand what my team can charge and my team is charging right now. Right now, they are able to charge 40,000 to 60,000
plus higher depending upon 6 month packages for 3 months, right? So 40 to 60K they are able to charge, right? अब मैं बोलूं कि okay, this is what I was charging, so I can make you charge this amount. That would be totally bullshit, right? Because okay, so ये टाइप हो गया because when I made this framework तब मैंने 1.5 lakhs पे किया था. Now I'm creating this video in 2024, so यहाँ पे मैंने amount update करी है. Okay, so 1.5 lakhs was till 2023 Jan. Then when I decided, okay, I don't want a single client, then we increased the prices and we still got clients. Back to this. So now I cannot say that I'll teach you how to sell at this price because that would be bullshit. वो होगा सरासर झूठ because most of you watching it do not have a brand. I started building my business in 2017. We have hundreds of case studies, right? We are featured in magazines like these, right? Here are some awards and stuff like that, right? So we have an authority, we have a brand, and we are kind of the pioneers of this industry, right? So that's why I'm able to charge that. Brand, I have made 1800 plus posts on social media. 1800 plus last 6 7 years, been very consistent, right? And authority भी बहुत high है because of knowledge is also one part of it because I teach upcoming coaches, PTs and stuff like that. So if I ever say कि भाई मैं आपको ये चार्ज करना सिखाऊंगा या ये चार्ज करना सिखाऊंगा, वो झूठ होगा because आपका ब्रांड अभी बिल्ड नहीं हुआ हुआ. Now I don't mean to say you can't do it ever, but right now 90% of you do not have a brand built up. तो अगर आपका ब्रांड नहीं है तो this is a joke, right? So back to this, ये कोई आपको सीधा कहता है मैं आपको हाई टिकट कोच बना दूंगा, that would be bullshit. You need to build a brand that way, and at FBA that's what we do. चलो आगे चलते हैं. Next, okay, so थोड़ा और आपको बैक ट्रैक दे देता हूँ. 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया, I was charging 4 to 8,000 INR for online coaching, and I was able to build it up to 1.5 lakhs 1.5 lakhs in 6 years, and then इधर से मैंने सीधा रैंडमली जंप मारा 4.35 पे. अगेन 4.35 मैंने रैंडमली वर्ड बोला, नंबर बोला था, एंड दैट वर्कड आउट. सो 1.5 lakhs पे लेके चलो. बट अंडरस्टैंड करो, जब 1.5 lakhs वाला पैकेज हम एक्टिवली सेल कर रहे थे, most people weren't just looking for transformation coaching. Most of these people were indirectly looking for more support. आप ट्रेंड बाय वाईवीएफ पे कंटेंट देखोगे तो you'll see we post a lot of stuff on career, we post a lot of stuff on business, on mastering life, and lot of stuff on relationships, right? So most of these people who were paying 1.5 lakh rupees were indirectly looking for communication channel because they knew that मुझे life coaching भी आती है. I can impact their life more than a transformation. So ये भी pinch of salt वाली बात होगी कि भाई 1.5 lakhs भी जब मैं चार्ज कर रहा था, तब ये लोग सिर्फ इस चीज के लिए नहीं आ रहे, they were coming for other stuff. If you check out our frameworks on Trained by YVS, you'll realize lot of team FBA coaches abhi they take relationship advice from me, right? Family advice from me, right? Which is totally fine, and I'm happy to help them with that, right? So basically, जिन लोगों ने इस पैकेज पे भी ज्वाइन किया, they weren't just looking to lose fat 10 kgs, 20, कम करना 20 करना. Some of them were looking to like level up their health like crazy because health बहुत ज्यादा messed up थी. Others were looking for other stuff, for example, relationships, business, lead gen, character building, all of these things, right? Because most of them knew कि we were at $1 million revenue at that time, around that time. All we were almost at that number, and we hit the number after a few months, right? So जो जो लोग इतना भी पे कर रहे थे, they were not looking for just transformation. Some of them were, and those were the ones जिनका blood markers, health markers काफी messed up थे, शादी नहीं हो रही है, मतलब पेन पॉइंट उनका बहुत हाई था, राइट? सो ये चार्ज करना भी थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए अनरियलिस्टिक हो जाएगा long term also, until unless you build those skills. If you are building those skills, then no one can stop you, right? So long story short, there's no tactic or sales skill or sales script. स्क्रिप्ट्स हेल्प करती हैं. अब ये नहीं है हम आपको एफबीए पे भी स्ट्रक्चर सिखाते हैं, प्रिंसिपल सिखाते हैं सेल्स के. दीज थिंग्स हेल्प, बट ये मैजिकली ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कोई ऐसी स्क्रिप्ट दे दूं जिससे आप 4.35 लाख चार्ज कर लो. नहीं, दैट्स बिकॉज ऑफ द ब्रांड, अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स यू हैव, हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. ये आपने हमेशा याद रखना है, right? And yes, keep in mind there would be always this kind of people once you reach a certain level that I want the top package, I have all the money in the world, right? That's like 5% of people maximum, right? There are certain kinds of people, but again uske liye you need to build a brand. Okay, so personally when I talk about coaches, what do I look at as a high ticket number?
24,000 से ऊपर जा रहे हो आप फॉर 12 वीक्स ऑनलाइन कोचिंग, मैं उसको पर्सनली हाई टिकट समझता हूँ। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन हर किसी की डिफरेंट होगी, बट पर्सनली इफ यू आर अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच और आप 24,000 चार्ज कर पा रहे हो फॉर 12 वीक्स ऑफ कोचिंग, देन इट इज हाई टिकट। 24, 22 से ऊपर भी, 24 के अबव इट्स हाई टिकट, एंड इवेंचुअली मोस्ट टीम एफ बी मेंबर्स रीच दैट। नाउ अब मैं अपने क्लाइंट्स में से भी बता देता हूँ मैक्सिमम मैंने किनको क्या चार्ज करते हुए देखा है। देखो, टीम एफ बी ए मेंबर्स में तो 45,000 टू 70,000 मैक्सिमम, right? Now, we have another mastermind which is called FBE Mastermind, which is designed to get you to the next level. It's FBA की next level है basically वो। उसमें मैंने डॉक्टर बिलाल को देखा है चार्ज अप टू 1.4 लाख रुपीस। Pranav Bahirwani charge up to 3.54 lakh rupees. He works with high net worth individuals in Hyderabad. Right. Then there's Anmol, there's Abhinav and Dhruv. I've seen them charge up to 70K. Right. सो अगेन ऐसे केसेस हैं, बट मैं ऐसे केसेस के बेसिस पे आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, बिकॉज आप इन सबको देखोगे, ऑल ऑफ देम आर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। सबका ब्रांड बिल्ड हुआ है। इन सब की केस स्टडीज एफबीए वाले पेज पे अवेलेबल है। प्लीज टेक योर टाइम, गो थ्रू इट। राइट। अगेन these people are charging it, but it's not the average. Average मैंने बता दिया आपको 24,000 to 30,000, 12 week package, cash collected upfront, right? एंड अगेन सो आपको कोई सीधा बोलता है यार एज अ कोच आपको मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा या आपका कोई फनल बना दूंगा, 2 लाख चार्ज कर सकते हो, 1 लाख कर सकते हो, ट्राई कर लो, बट दैट्स बुलशिट, बिकॉज यू नो अगेन दैट्स लिटरली कॉमन सेंस एंड दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ऑल्सो take this with a pinch of salt. Some people are charging a bit lower than this, right? There are some of my coaches, old coaches also, who are charging like 18,000, 16,000, 15,000, depending upon the direction in which their brand is built. कुछ केसेस में क्या होता है, आपकी एक सर्टेन वाइब है and you attract certain kinds of people because of that, or because of that you cannot charge that much, right? So you know, ऑल ऑनेस्टी कुछ लोग कम भी चार्ज कर रहे हैं तो इससे, बट एवरेजेस यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे अगर मेरे कोचेस पहुंच जाते हैं 24 to 30,000, आई एम हैप्पी, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि यार देर आर दीज क्लाइंट्स हु आर चार्जिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, कैन ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स चार्ज 45,000 to 70,000 for 12 weeks of online coaching? स्वीट एंड सिंपल आंसर इज नो। मुझे फालतू में यहाँ पे किसी को झूठ बोलने का शौक नहीं है, राइट? बिकॉज एवरी वन कैरीज अ वाइब। योर पर्सनैलिटी कैरीज अ वाइब इन योर मार्केटिंग मैसेज। योर डिपेंडेंट अपॉन योर नीश एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू गेट, बिकॉज ये सारे आप लोग देखोगे, इनके रिजल्ट्स देखोगे, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स ला रहे हैं सबके लिए, राइट? सो instead of making bullshit claims, we teach them how to charge maximum they can, right? Based on their brand, while elevating their brand authority and respect. So हम क्या करते हैं, एनएसयू मेथड की अप्रोच यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फ्रॉम योर सर्विस टू योर मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया, टू योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, टू योर नीश, टू योर वाइब, to your authority. We work on all of these aspects so that eventually this number automatically goes up, maximum you can charge. And this goes up as you get more experience, your content gets better, your profile gets better, you get more results, right? So the goal should be creating a mix of right ticket and right volume. As simple as that, to support your business growth. नाउ आई वॉन्ट यू टू पॉज फॉर अ सेकंड। आराम से पॉज करो और बैठो और अपने ब्रांड को देखो। सोशल मीडिया प्रोफाइल को खोलो, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोलो और देखो। सिंपल क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ दैट आर यू चेजिंग अ मैजिकल वे टू हाई टिकट, और यू आर बिकमिंग द पर्सन हु कैन चार्ज हाई टिकट? आज आप मेरी वीडियो भी अभी इसलिए देख रहे हो, आपने इतनी सारी केस स्टडीज देखी हुई है बीए पे, राइट? या आपने पुरानी कोई वीडियो देखी, आपको पता है बहुत हाई वैल्यू आती है। I know if I want to grow FBA right now, I need to create value like this for you guys, right? And someday or other, you will be like, dude, this is the best person who's a solution, who's the solution to my problem. And this is coming from a person who spent so many time, so last few months मैंने सिर्फ ads को understand करने में principally ये सारी चीजों पे करे. Then I realized that nothing beats value. Ads are amazing, great addition, but nothing beats value, right? So that's what I'm doing here. I'm providing high level of value to you so that you think कि यार free में इस बंदे ने इतनी value provide कर दी, what happens when I pay this person? It's as simple as that, right? Keep in mind, आपके clients और human smart है, कोई magical script नहीं चलती। brand build करो, value provide करो next level way से, and
you would be able to charge like these people, right? You would be able to charge like these people because सबके केस में ये है, because they are providing a lot of value, they're changing lives, right? आपके क्लाइंट, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको सिर्फ ये वो पे करते हैं जो उनको वर्थ दिखती है. अब इसमें क्या होता है, मैं आपको पूछूं कि इज योर सर्विस परफेक्ट, यू वुड रिप्लाई यस. इफ आई आस्क यू सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी रिजल्ट्स डू यू पोस्ट पर मंथ ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तब आप चुप हो जाओगे, राइट? दैट मीन्स आपको जितनी अपनी सर्विस की वैल्यू लगती है उतनी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपको अपने कंटेंट वर्ल्ड में सबसे अच्छा लगता है, मे बी नहीं है, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. सो लोग आपको सिर्फ इस बेसिस पे करते हैं कि आपकी हाउ श्योर दे आर दैट दे कैन चेंज, यू कैन चेंज देयर लाइफ, राइट? सो परसीव्ड वैल्यू. परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज ऑब्वियसली कन्वर्जन प्रोसेस, जिसमें सेल्स स्ट्रक्चर वगैरह चीजें आ जाती हैं. नेक्स्ट इज योर ब्रांड. अब ब्रांड क्या है गाइस? कीप इन माइंड, ब्रांड पे हमने एक और वीडियो बना रखी है. बट ब्रांड इज नॉट जस्ट व्हाट योर प्रोफाइल लुक्स लाइक, इट्स एवरीथिंग. व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट यू स्टैंड अगेंस्ट. सर्विस में क्या है आपकी, नॉलेज स्टैक में क्या है, नीश क्या है आपकी, हाउ डू यू कोच, व्हाट प्रिंसिपल्स डू यू यूज, व्हाट इज योर कोचिंग मेथड, एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो दैट्स वन थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. Okay, so now there are also coaches who can immediately increase their coaching prices. These are the coaches who are stuck between 60,000 to 3 lakhs. यहाँ 80,000 लिखा है, but 60,000 to 3 lakhs के बीच में अगर आप रुके हुए और आपका कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, आपको ये नहीं पता कि यार आपको प्रोस्पेक्ट जब रीच आउट करता है आपने उनसे क्या बात करनी है, हाउ डू यू गेट देम टू अ कॉल एंड हाउ डू यू कन्वर्ट देम ऑन अ कॉल. दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. अगर आप ऐसे बंदे हो तो आज के आज हमें मैसेज करो, बिकॉज पीपल लाइक यू, वी आर एबल टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ ध्रुव. लिटरली 80,000 टू 7 lakhs jump, 2 phases में. डॉक्टर बिलाल, सेम केस एज दिस. We started at 80,000 per month. We got to 5 lakh rupees within the first month itself. A conversion process fix करके. So if you are someone stuck here और conversion process नहीं है आपके पास, हमें मैसेज करो. Right? I'm pretty sure that we can sort it out for you. Right? Uh, so basically अगर आप इस वैरायटी में हो और आपका कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? अनडिनाइबल ऑफर बिल्ड करना है. You need a process to put out more offers in a unique manner. इस कोच रेंज की एक और प्रॉब्लम होती है, आपको अपनी कोचिंग सर्विस के बारे में बात करने में समहाउ शर्म आती है. आपको लगता है बहुत सेल्सी लगेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको अभी कुछ सेल्स ही लगा इस पूरी इसमें पूरी वीडियो में? मैंने लिटरली कॉल्ड यू आउट गाइज आउट डायरेक्टली बिकॉज आई नो आई एम प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. आई नो आई कैन चेंज योर लाइफ, राइट? ऑल्सो अ सिस्टम टू जनरेट लीड्स ऑन डिमांड and set up a conversion system up, which can also be called the sales process. Sales मुझे word थोड़ा sleazy लगता है तो मैं conversion word use करता हूँ. And this is the one of the first things that we teach at FBA after building your service. 90% coaches का क्या इश्यू होता है, उनकी सर्विस भी बेकार होती है. So we work on that, right? Now question आ जाएगा, how much should beginners charge? As a beginner you can charge any number. बिगिनर्स में क्या होती है कि ईगो की, यार भाई मैं मिनिमम ये चार्ज करूंगा. व्हाई? राइट नाउ व्हेन यू हैव स्लॉट्स अवेलेबल यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज राइट नाउ व्हाट यू नीड इज you need more yeses to build your self confidence. Second, you need more transformations, you need more case studies, you need more experience, right? So इसलिए राइट नाउ यू कैन चार्ज एनी नंबर. अब एनी नंबर में ये मत करना कि 200 रुपए चार्ज कर रहे हो, 400 रुपए चार्ज कर रहे हो. बट generally I've seen 8,000 भी चलेगा बिगनिंग में, because right now your goal is to what? Build your brand. Brand कैसे build होता है? When you become a better coach. How do you become a better coach? Obviously we teach you how to be a better coach, we build your service up, but alongside what you need is, repeat after me, more case studies and more experience, both go hand in hand, right? अभी आपकी सिचुएशन में अगर इफ यू आर अ बिगनर कोच, आपको येसेस ज्यादा सुनने की आदत पड़नी चाहिए, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे. सो इवन इफ यू आर चार्जिंग 8,000 और नंबर अराउंड दैट, दैट्स फाइन. मोस्ट ऑफ द बिगनर कोचेस एट एफबीए चार्ज समवेयर बिटवीन 8 to 15. अब कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस डे वन से नेक्स्ट लेवल होता है, दे चार्ज 15. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? सो एक्सपेरिमेंट करो एंड अगेन कीप इन माइंड प्राइस इज जस्ट अ नंबर. 5 लोगों ने आपको येस कर दिया है 8,000 पे,
प्राइसेस 12 कर दो, पांच और ने यस कर दिया, 15 कर दो. That's how I built it up for trained by YBS, right? And that is what. ऑल्सो मंथली पैकेज सेल करना अवॉइड करो, बिकॉज अगर यार एक मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पुल ऑफ होती. सीधा सा हिसाब है, सीधा सा प्रिंसिपल है, यू कैन नॉट पुल ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 मंथ. सो मंथली पैकेजेस मत सेल करो इवन इफ प्रोस्पेक्ट डिमांड्स दैट. एकदम बिगिनर हो और लो कन्वर्ट नहीं हो रहे तो कर सकते हो, बट आपने 12 वीक पैकेज ही करना है. तो इसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि अगर कोई बोलता है कि यार आपका 12 वीक पैकेज है 12,000 का, 12 वीक, और कोई कहता है 4 वीक कितने का है, आप बोलो 7,000 का या 6,000 का. ठीक है, उसमें बंदे को लगेगा कि यार ये लेने का फायदा ही नहीं है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, 12 वीक पैकेज ले लेता है. सो दैट वर्क्स आउट, राइट? दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, प्राइसिंग कॉमन सेंस. ओके, सो ये भी बता देता हूँ कि जनवरी 2023 तक मैंने 4,000 से 1.5 lakhs पे कैसे किया. दो तरीके हैं इसके. नंबर वन ऑप्शन है इसकी, एवरी टाइम यू ऑनबोर्ड 5 क्लाइंट्स, 5 लोगों ने आपको यस कह दिया, देन यू इंक्रीज प्राइसेस बाय 10%. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है, मैं पर्सनली क्या करता था कि जब दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कर दी पेज पे मैंने, एवरी 3 to 4 ट्रांसफॉर्मेशन आई यूज टू इंक्रीज माई प्राइसिंग बाय 10%. आपको मैं बताता हूँ, अगर अच्छे स्टॉक करना है तो ट्रेंड बाय आईवीएस पे मई 2017 देखो. आई पोस्टेड फुट, एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं, बट अराउंड 15 ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 मंथ. आई माइट बी रॉन्ग, माइट बी 10-11, बट 15 ट्रांसफॉर्मेशन एक महीने में पोस्ट कर रहा था मैं, राइट? बिकॉज माई सर्विस वॉज गेटिंग चेंजिंग लाइफ फॉर पीपल, राइट? सो बेसिकली 10% में इंक्रीज करता रहा फॉर एवरी 2 to 3 ट्रांसफॉर्मेशन. सो प्राइस आई वॉज एबल टू ब्रिंग इट अप टू दिस, राइट? इन 2022 मैंने 1.5x कर दिया, बिकॉज मेरे पास 3 और पैकेज बन गए थे. मेरी टीम थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, रिजल्ट ला रही थी, तो मैंने सीधा बेसिकली अराउंड 90,000 से सीधा 90,000 1 लाख 10 से सीधा 1.5 lakhs कर दिया था. बिकॉज तब my company has reached another level. My goal was to just focus on marketing and building a better service at the back end and coaching my coaches, right? So उस टाइम पे मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू स्टे इन द गेम सो दैट आई एम एबल टू इंप्रूव द सर्विस, क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड स्टफ लाइक दैट. एंड अगेन कीप इन माइंड, जब 1.5 भी कर रहा था, अपनी टीम पैकेजेस को टेक केयर कर रही थी विच वर मोर अफोर्डेबल, 30 to 60,000 रेंज में. ठीक है. एंड again, this is what I like doing with most team FBA members also. Strategically improve karo, and once you have reached a certain level, we use a strategy which is called revolving prices theory, pricing theory, that depending upon the case you charge, right? Some cases you charge a little more, some cases you charge a little less, by honestly telling your prospects. आप honestly prospect को बोलोगे भाई आपके केस में मेरा काम टाइम ज्यादा लग रहा है, that's why I'm charging you a little more, and people happily say yes, no worries, राइट? बट इसका तरीका है जिसके लिए हमने एक ट्रेनिंग बना रखी है टीम एफबीए के लिए, रिवॉल्विंग प्राइसिंग थ्योरी. ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिफोर द हाई टिकट यू नीड टू बिल्ड योर ब्रांड एंड यू नीड टू गेट दैट राइट. कीप इन माइंड, मैं ये जो 4.35 lakhs भी चार्ज कर रहा हूँ या 1.5 lakhs भी कर रहा हूँ चार्ज, मैं सिर्फ इसलिए कर पा रहा था बिकॉज दीज पीपल wanted more from me, business advice, relationship advice, and these were people who had all the money in the world but they were like their life sucked, so kind of ये life coaching चाहते थे मेरे से along with transformation, right? Next is vibe is felt and cannot be faked. अब आप आज सोचो कि यार ये YVS चार्ज कर लेता है इतना, जो YVS अपनी स्टोरीज पे बोल रहा है सेम चीजें बोलने लग जाता हूँ. It won't work out because this cannot be faked, right? It's very natural. So what I would suggest is build everything in your style, build your business and your brand in your style, and that is what I would recommend, right? That's what we teach at FBA, that nothing is built on FBA style or YBA style. It's everything is built on your style but using our principles which have helped us grow our business to the next level. And that's what vibe is built with your brand, which comes from experience and doing the right stuff, using the right principles and building a right principle based business. Vibe is built by becoming the person. Guys, अभी मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ साइकोलॉजी पे. ये नहीं कह रहा आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट आई एम स्टिल स्टडिंग राइट नाउ. मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी करा है मैंने, राइट? दैट्स व्हाई आई कैन टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? सो यू नीड टू बिकम द पर्सन. टू मेक श्योर करो आप खुद को अपस्किल कर रहे हो थ्रू आउट, लर्निंग ऑल द टाइम, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड कोचेस हु हैव द वाइब बट प्रोसेस नहीं है, कन्वर्जन प्रोसेस नहीं है, ऑफर नहीं बिल्ड हुआ, content is not in the right direction as per their niche, and that is what.
And this is what we should be fix your vibe, build your brand, build your conversion process, offer service, results post करो, and you'll change the game. And इन सारी चीजों पे fast track करना है तो just click the link below, and that is what, guys. Let's start with right ticket and build that vibe, and let's build that brand. YVS checking out. Thank you and bye.